India, a land of a rich variety of flora and fauna, houses a vibrant range of habitats. From the mightiest mountain range in the north to a lush span of grassland spread across the country. Brimming with wildlife and vegetation, India has it all. Known not just for its biodiversity, India houses a rich heritage and culture that stems out of its history. A big part of this historic land are the Maharajas, known for their royalty, wealth and skills. The kings of India were known across the globe for their elaborate hunting sprees, which was one of their favorite hobbies. Documented in paintings and folklore, often to show the glory of the kings. Staging elaborate big game hunts happened to also be a favorite for the British officials, as they too wanted to put up a strong front against the rulers of the princely states. The systematic murder of the big cats continued until 1966, which saw a great decline in the tiger population in the country. Forests and jungles were raided by these men for hunting. And one such hunting ground was located in the heart of Rajasthan. Lying on the northern extension of the Vindhyan range, Ranthambhore is a deciduous forest with a variety of natural species and a blend of history that goes back to over 1,000 years. The forests of Ranthambore were turned into a national park in the summer of 1980 after the launch of Project Tiger, which was an attempt to save the critically endangered big cats. 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ, 1980 में दिस एरिया वाज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क। तो काफ़ी छोटा एरिया जो था, करीब 300 स्क्वायर किलोमीटर, उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। जब ये नेशनल पार्क बना, इससे पहले पूरा जंगल में लोग रहते थे, छोटे छोटे गांव थे। हम जो पैराफेरीज में रह रहे हैं, हमारी गाय भैंसें भी जंगल में ही रहती थी। नेशनल पार्क कोई भी एरिया जब डिक्लेयर होता है तो जितने भी राइट्स और कंसेशन होते हैं लोकल जो विलेजर्स के हैं, वो एक तरह से सीज हो जाते हैं। और ये एक गुरिल्ला युद्ध की तरह था, मतलब लोकल जो पब्लिक थे उससे एक तरह से, स्पेशली बरसात के दिनों में जब बारिश का सीज़न होता था तो एक तरह से गुरिल्ला युद्ध सा छिड़ जाता था गांव वालों में और मैनेजमेंट में। एक दूसरे को लोग वाग देखना पसंद नहीं करते थे। The guidelines of the park require the local communities to move out of the forest. This aggravated the conflict between the locals and the tigers.
constant friction between the villagers and the management. It were the big cats who suffered the most. The forest was in need of a voice that would make the villagers realize why resolving this conflict was crucial. One man whose life had been changed by the forest and whose work would become a voice for the tigers soon came into the picture. ढेरे हैं, मुंह से बोल नहीं सकते, मगर इनकी कला है, तो कला से ही इनकी पहचान पूरे मतलब भारत के अंदर है। 10 साल का ही उसके बाप के बजे आया था काम करने के, जब से कहने लगे बाप कलाकार था, बस वो कलाकार है, किसी बात की कमी नहीं है उसमें। Imamuddin is a man who fights two battles through his art. Between the wildlife of Ranthambore and its villagers, and another that prevails amongst people for generations, the battle of religion. जाति से मुसलमान है, मगर गणेश जी की जो तस्वीर बनाते हैं, वह भगवान ने इनको क्या बनाया है। Even though his journey as an artist started as a signboard and number plate painter, Imamuddin's art was never confined to it. His true talent was recognized when Fateh Singh Rathod and Valmik Thapar entered the story of Ranthambore. Fateh Singh Rathod and Valmik Thapar are two individuals who played a key role in transforming the forest of Ranthambore into what it is today. By appointing local members for the process, they managed to convince the villagers to evacuate their homes for the cause, and Imamuddin was one of these appointed members. His talent was soon spotted by Valmik Thapar, who foresaw Imamuddin's dedication towards wildlife and painting, and provided him a platform to showcase his talent. जो अनजान व्यक्ति हैं, जो टाइगर के बारे में नहीं जानते हैं या रणथंभोर के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको एक जानकारी प्रदान करता है आर्ट। फॉर एग्जांपल ये यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, उस पर आर्ट वर्क किया हुआ है, पूरा टाइगर पेंटिंग से वो किया हुआ है। तो इनका मेन उद्देश्य यही है कि उनको एक ग्लिम्स मिलता है कि व्हाट इज़ रणथंभोर, यहाँ का टाइगर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आर्ट वर्क जो है वो टाइगर को एक बहुत बड़ी पहचान दिला रही है, और टाइगर की वजह से आर्ट वर्क को भी एक पहचान मिल रही है। कला है तो सब कुछ है, कला नहीं है तो निथरक है। आदमी के पास कुछ नहीं है, फिर चाहे उसके पास पैसा हो, मगर उसके पास कला नहीं है तो कुछ नहीं है। देखा जाए तो टाइगर कंजर्वेशन की तरफ आदमी का बहुत बड़ा उनका रोल है कि भाई उन्होंने एक अपनी छाप और एक रणथंभोर का जो लेवल है सब जगह जो बढ़ाया है। आदमी अच्छा तैयार
तू नाच बजा, तू नाच बजा, मान मत, मान मत। क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था तो लोग बाग ये कहते थे कि साहब 21वीं शताब्दी में, जिसमें हम आज 20 साल हो गए, बोला आप टाइगर नहीं देख पाओगे। ये लोगों का एक काफ़ी बड़ा वर्जन था, लोग बाग जो है ये बात कहते रहते थे। धीरे धीरे चीज़ें बदली, लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा। और मैं ये मानता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस होने के लिए जो लोकल कम्युनिटी जब तक आपके साथ नहीं होगी, तो वो मैं नहीं सोचता कि वो तरीके से जो है वो प्रोजेक्ट सक्सेस होगा। Generations of the big cats have been hunted for pleasure and prestige, poached for greed and vengeance, and killed for land and dominance. A large demand persists for different body parts of the tiger, for their use in modern medicine and folk remedies, amounting to $200 billion per year. The objectification of the tigers in a monetary sense has disrupted the ecosystem long enough, sidelining the actual benefits that an alive tiger brings to a community in many forms. After a very rough patch, the human-wildlife conflict decreased in Ranthambore as the villagers realized how tourism brought survival and growth for them. The forests of Ranthambore had gradually begun to revive themselves as they took over the generations-old monuments across the area. The book of Ranthambore National Park was reprinted in lush colors, and the tigers reclaimed their long-lost territory. शुरू में कहते थे कि भाई टाइगर के पीछे इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, हजारों करोड़ों रुपए, उससे ज़्यादा तो आपको टाइगर दे रहा है। शुरू में लोग बाग टाइगर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते थे या बोलते थे, उन सबकी ज़िंदगी टाइगर ने बना दी। अगर आज टाइगर कंजर्वेशन में यहाँ सबसे बड़ा योगदान जो आया है वो है टूरिज्म। टाइगर तो हमारे लिए भगवान है, क्योंकि जो हम आज जो कुछ भी है बिकॉज ऑफ टाइगर्स। अगर ये टाइगर नहीं होता तो रणथंभोर की कोई पहचान नहीं थी, रणथंभोर की कोई पहचान नहीं थी तो टूरिज़्म नहीं पनपता यहाँ पर। आज हर घर में, हर गांव में आप जाओगे, कहीं जिप्सी खड़ी मिलेगी, कहीं कैंटर खड़ा मिलेगा, कभी आपको गाइड मिलेगा, कभी कोई ड्राइवर मिलेगा, कोई नेचुरल्स मिलेगा। 100 होटल है, उसमें फ्रंट लाइन स्टाफ 90% आपका लोकल मिलेगा। हमारे यहाँ रोजगार का अगर कोई एकमात्र अगर कोई साधन है तो सिर्फ है टाइगर। इससे 70,000 लोगों को एक नंबर में रोजगार मिला हुआ है। The revolution to preserve the tigers has not ceased since the summer of 1973, when Project Tiger was launched with communities, forest officials and non-governmental organizations working side by side. The ecosystem of Ranthambore revived because of their contributions and, of course, the tigers. One particular tigress that has made her mark in the history of Ranthambore is T16, lovingly known as Machli. A tigress whose reign transcended to more than just her territory. Machli has a lineage in half of the population of both Ranthambore and Sariska National Park. Her contributions to the park made Machli not just Ranthambore's pride, but also close to everyone's heart. मैं कैंटर में था, हमारे साथ टूरिस्ट थे। हम राजबाग लेक के लेफ्ट साइड में जो प्लेटफार्म एक जगह हम बोलते हैं वहाँ थे। मछली उधर से पहाड़ी की तरफ से आई, नीचे राइट साइड पे डियर थे। वो डिस्टेंस था, उसने हमारी गाड़ी को हाइड किया, वो हमारी गाड़ी के पैरेलल बराबर उस डियर से हाइड करती हुई चली। और जैसे ही उसका डिस्टेंस 20 फीट का रहा, उसने हमारी गाड़ी से सामने से क्रॉस करके और डियर को मारा। इतना अनबिलीवेबल सीन था
कि हमारे टूरिस्ट और हम देखते रह गए। लेपर पति नाम पति आओ आओ ए लेपर पति अल्लाह पतात दिवाली ए ताल तो ताल ते ताल दिवाली अतब Every single person associated with Ranthambore adored her, and this was evident even when she passed away. तो उनके ऊपर इन्होंने बहुत सी पेंटिंग्स बनाई है और बहुत सी पेंटिंग्स बेची है। जब मछली का डेथ हुआ, महीना 1.5 महीना 2 महीने तक ये पेंटिंग करते थे, लेकिन इनका मन नहीं लगता था। इन्होंने उसी के बारे में मेरे से पूछा, सरताज मछली टाइगर खत्म, अब आदमी छोटी सी चीज़ को लेके बड़ा डिप्रेस हो जाता है कई बार कि भाई मेरे पास तो ये नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इमामुद्दीन जी जो है एक तरह से उन लोगों के लिए मैं तो कहूँ इंस्पायरेशन है। जो मछली है उसने मोस्टली टाइम उस एरिया में बिताया जो हर टाइगर का एक सपना होता है कि मैं उस जगह टेरिटरी बनाऊं। टाइगर को देख के एक आपको पावर का, स्ट्रेंथ का, बैलेंस का, मतलब सभी तरह की एक फीलिंग आती है। आप देखोगे रणथंभौर का टाइगर हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। मोनूमेंट्स के बीच में टाइगर घूमता हुआ आपको किसी पार्क में नहीं दिखाई देगा। छतरी के बीच में से निकल रहा, कभी झरोके में से देख रहा। मछली ने उसे एक टाइगर रेस्टिंग पैलेस की तरह यूज किया। उसमें वो 3 विंडो जस्ट राजबाग लेक के सामने खुलते हैं और सिर्फ देखती थी जैसे कोई क्यून बैठी हो वहाँ। आराम अल्लाह आराम आराम 3 आराम